ये जो टॉपिक है सेविंग्स का बेहतर तरीका, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज आई फील दैट आप अगर सेविंग्स ही करोगे और इन्वेस्टमेंट्स नहीं करोगे तो रिटायरमेंट करने का जो होप है वो कम होता है. सेविंग्स करने से बस काम नहीं चलेगा, सेविंग्स के साथ इन्वेस्टमेंट्स भी करना पड़ता है. So I think the way to understand this is how do you look at savings and how do you take advantage of savings and take it to the next level. And ये है जो आज एक घंटे में बोलेंगे कि बेहतर तरीका कैसे करना है. So let's start by let's just talk a little bit about how things have changed. जमाना बदल गया है, right? कैसे बदला है? Now a lot of these things you will have seen. टाइपराइटर से हम लैपटॉप पे आ गए, फ्लॉपी डिस्क से सीडी यूएसबी पे आ गए, और रोटरी फोन पे और स्मार्टफोन पे आ गए. हाउ वी कुक हैज चेंज, हाउ वी ट्रैवल दैट हैज चेंज, राइट? आई मीन लॉट ऑफ यू आप रिकॉग्नाइज करोगे वो मारुति 800 है जो पहली बार निकली थी, एंड अभी नाउ यू आर लुकिंग एट टेस्ला कमिंग इनटू इंडिया एट सम पॉइंट. हम शॉपिंग कैसे करते हैं वो भी चेंज हो गया है, हम खाते कैसे हैं वो भी चेंज हो गया. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट? हाउ वी टेक कंज्यूम एनर्जी, दैट इज आल्सो चेंजिंग. सो व्हेन यू थिंक अबाउट योर रिटायरमेंट, वो भी बदल गया है, राइट? सो पहले कैसे करते थे कि यूज्ड टू रिटायर 60 साल के ऊपर, योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 75 मैक्सिमम, राइट? So you had 10 to 15 years of retired life that you had to plan for. आप joint family में रहते थे, you were dependent on your children, right? Expenses were fairly standard, right? And your plans, आप जो retirement के जो plans रखते थे वो very standard. Pensions थे and traditional मतलब fixed deposit. अभी क्या हो रहा है? A lot of people are retiring earlier. Life expectancy बढ़ गई है, तो आपका जो रिटायरमेंट का जो वक्त है वो ज्यादा होगा, राइट? सो नाउ ऑन एवरेज आपको 30 साल के लिए रिटायरमेंट प्लान करनी है. फैमिलीज हैव आल्सो चेंज्ड, जॉइंट फैमिलीज इतने नहीं है, न्यूक्लियर है, राइट? चिल्ड्रन आर आल्सो डूइंग देयर ओन इंडिपेंडेंट थिंग, राइट? यू नाउ हैव टू प्लान फॉर योर ओन रिटायरमेंट. चिल्ड्रन विल नॉट टेक केयर ऑफ यू. और एक्सपेंसेस भी बदले हैं. स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस जो थे खाने पीने का, नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ ट्रैवल, you're thinking of hobbies in retirement, so you need to spend for that and you need to make sure you have funds for that. So now your traditional investments, yes, you still have your fixed deposit, लेकिन आपके पास अभी और एक जरिया है जो market linked avenues, those are far more valuable. So the question is, क्या सच में जमाना बदल गया है? So how have investments changed, right? So when you think about that, that has not changed. कल भी we were doing properties, bank deposits and gold. आज भी 80% is in these three buckets. Property, घर जो है अपना, बैंक डिपॉजिट और सोना. अगर आपका जो फाइनेंशियल वेल्थ है और अगर 80% इन तीनों में है, which we will see are not necessarily the best returning assets, then how are you going to build आपका जो रिटायरमेंट का जो नेस्ट होना चाहिए, how are you going to build that? So if you look at this, falling interest rates, right? You have interest rates that were 13%, अभी 6% पे आ गए, right? You have a large amount of bank deposits in the system. If your interest rates are going down, आपकी जो कमाई होती है जो बैंक डिपॉजिट में, वो भी नीचे आती है, right? You need to change that. You need to find an alternative to that. The biggest factor is why? Inflation. ये जो है, ये 30 साल का जो हमारा इन्फ्लेशन का एवरेज है वो 6 या 7% के बीच में, राइट? सो
अगर आप 6-7% से ज्यादा नहीं कमाते तो यू आर नॉट इवन कीपिंग अप विद इन्फ्लेशन. एंड व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? यू सी दैट आप जब मार्केट में जाते हो खरीदने, whatever you are buying today next year is going to be little more expensive. एंड अगर आपकी जो इनकम नहीं बढ़ती एट द सेम लेवल, देन आपकी जो परचेसिंग ताकत है वो कम हो जाती है. सो यू नीड टू हैव इन्वेस्टमेंट्स दैट एट लीस्ट कवर इन्फ्लेशन. सो व्हाट कॉस्ट यू 100 rupees टुडे, टुमारो इज गोइंग टू कॉस्ट यू 107, राइट? 100 का 107 होने वाला है अगर अपने पास 7% का इन्फ्लेशन है. तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है दे ऑल्सो हैव टू एटलीस्ट बी 107, so you can afford your 107. आप देखो प्रॉपर्टी में ये है रेंटल यील्ड्स अक्रॉस इंडिया. द हाईएस्ट यू हैव हियर इज लेट्स से अ 4% जो वडोदरा में, राइट? सो 4% also is not covering inflation. Everybody likes property, घर होना चाहिए, but those that are thinking of this as an investment, this is not providing you with that return. तो इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें? What beats inflation? If you look across the asset classes, equities has consistently beaten. Gold आता है second. अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखोगे तो 6%. So just about in line at the lower end of our average. But आप equities देखो तो 17% है, right? And this is over a 20-year period on an average. So every year you're getting 17%. So you are getting 10% on average more than your inflation level. So ऐसे आपकी जो investments होती है, that builds. We will talk a little bit about a compounding concept and why that is important for you. So if you look at your different categories, ये जो categories है financial assets or full assets, right? Equities का जो portion है on average is only 5% of your total wealth. इसको बढ़ाना चाहिए. Because if you look at all these different asset classes, equities is the one asset class जहां पे आप inflation को regularly beat करते हो, right? So as I was talking earlier, whatever asset class you look at the very least आपको inflation से ज्यादा होना चाहिए return. But equities are risky. सब लोग डरते हैं equities से. क्यों डरते हैं, right? Equities are risky. Why do you say equities are risky? Because equities में ऊपर नीचे होता. So let's go back to that slide that I was talking about here. Inflation वाला जो slide I was showing you. Oops. Okay. So if you see, ये जो है, अगर ये यहाँ से नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर फ्लैट हो गया, ऊपर गया, नीचे आ गया, यहाँ पे गिरा पूरा, फिर कोविड के बाद, I mean, so this is COVID, right? ये है 2008 wali crisis. When that happened, the market went down a lot. But you fast forward, आप आगे जाओ 10-12 साल, and it looks like such a small move, right? So people think कि ये ऊपर नीचे makes it a risky asset. But आपका अगर investment horizon long term हो, जैसे होना चाहिए आपको, जब आप रिटायरमेंट के लिए जब प्लानिंग कर रहे हो तो 1-2 साल में रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग नहीं होती है. You need 20-25 years, you need 5, 10, 15, 20 years. Over that period, equities, while they look volatile, the risky element of it is different, right? So let's talk about that. What do you think is the solution? Now, mutual funds, I would say, are the best solution, and they've been proven to be the best solution over the years, right? Partly because you can start with a simple investment plan, keep it regular, and you have consistent returns. It is the most transparent industry. So it is one of the best vehicles to build your investment landscape. So let's talk a little bit about the kind of the basics of investing. There are 3 major things. आप जब invest की बात करते हो, savings अलग होती है, लेकिन आप जब invest की बात कर रहे हो, there are 3 major things.
कितने देर के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कहां इन्वेस्ट करना चाहिए. Those are the three main questions you always have. Now, we will answer those questions very quickly, but just to give you a sense, how long you invest, आप कितने देर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, the longer you can stay invested, the better will be your outcome. तो आप जितना देर रख सकते हो आपका इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली, आपकी भलाई उतनी ज्यादा होगी. When you invest, everybody आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट ऊपर है नीचे, अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए. माय आंसर टू दैट इज, आपको जब भी इन्वेस्ट करना है कर लो. टाइमिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट एज मच एज आप कितनी देर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं. राइट नाउ, वेयर टू इन्वेस्ट, वी विल टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट. सो हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टे लॉन्गर बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग. सो यहाँ पे एक हमारा एग्जाम्पल है जो वन ऑफ आवर फ्लैगशिप फंड्स इज फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप. ये अभी 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है. सो लेट्स टेक अ सिंपल थिंग. आपका अगर नॉर्मल एसआईपी हो 10,000 हर महीने का, सो आपका अगर आफ्टर 20 इयर्स और आफ्टर 30 इयर्स आपका कॉर्पस जो है ना इन्वेस्टेड, आपने पूरा जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 34 लाख है. लेकिन आपका जो रिजल्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स इज 10 करोड़. राइट, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 34 लाख है, लेकिन आपका जो रिजल्ट इन एंड 10 करोड़ है 30 साल के बाद. तो आपका जो XIRR है वो 19% है. नाउ आई विल गिव यू वन आइडिया. अगर आपने स्टेप अप SIP किया, आपको याद है हमने इन्फ्लेशन की बात की थी, राइट? तो आपने अगर स्टेप अप हर साल आपने आपका जो SIP है बस 10% ज्यादा कर दिया, राइट? सो योर इन्वेस्टेड, आपने जो इन्वेस्ट किया है वो 1.67 करोड़, लेट्स से राउंड इट अप 160 करोड़ हो जाए, 1 करोड़ 60 लाख सॉरी. लेकिन आपका जो रिजल्टेड, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ आफ्टर 30 इयर्स, 10 करोड़ के बगैर ऑलमोस्ट 17 करोड़ हो जाता, just by changing your SIP 10% every year. So just keep it in line, slightly above inflation. So there is a huge compounding effect, and what compounding I will explain. So let's take one more example. We have a Prima fund, which is another one of our long-term funds, right? And a lot of you probably already know it and invest. Normal SIP 10,000 per month, invested corpus 35 lakhs. आपका जो रिजल्टेंट है वो 13 करोड़ है, राइट, आफ्टर 30 इयर्स. बट इफ यू स्टेप अप, राइट, सेम थिंग, आपने अगर 10% ज्यादा डाल दिया एवरी ईयर, राइट, यू चेंज योर SIP, योर इन्वेस्टेड कॉर्पस बिकम्स 1 करोड़ 80 लाख, राइट. लेकिन आपका जो कॉर्पस है 30 साल के बाद वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, राइट. So from 12 it's become 23, right? So that impact with just changing a little bit, आपका जो end result है retirement के time पे becomes much more comfortable, right? So you have to think of how you want to change, and the reason is very simple. When you started 10,000 a month was the right thing to do. लेकिन हर साल अगर inflation is rising 6 to 7%, आपने अपनी investment change नहीं की. You need to change that so that you actually are then being able to retire with a much larger corpus. So this is simply put a compounding effect. So I will explain this to you, right? 5 साल के बाद, so minimum when you think of retirement, you want to think at least 5 साल increments you want to think about, right? So if you invested after 5 years, आपका जो portfolio है, majority of that portfolio, any more than 50%, right, 56% is your gains, right. The remainder is what, जो पैसे आपने डाले हैं अंदर पोर्टफोलियो में, बाकी का जो है that the portfolio has done work. So when we say कि पैसे को काम करना चाहिए, this is an example of that.
सो आप अगर सोचो कि इफ यू हैव इन्वेस्टेड राइट फॉर द नेक्स्ट 20 years, एट द एंड आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है बस 3% है. द मनी हैज डन द वर्क फॉर यू एंड योर एंटायर पोर्टफोलियो नाउ इज ड्रिवन बाय द गेन्स इन योर पोर्टफोलियो. तो वो जो इफेक्ट है उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग का इफेक्ट.